Hey guys, good afternoon. I hope you guys have started joining in. Just a quick hi or hello in the chat would be really good, so we can start within a minute. So I'm gonna wait for a minute to let people join in. So meanwhile, hello and welcome everyone, and happy Vijayadashmi to all of you, whosoever is part of the lecture today. I hope you guys are doing well. Right, so just quick hello or hi on the chat would be really good, guys. So if you guys have started joining in, so you can ask your friends and family members, I mean, whosoever is willing to join our lecture. So just inform them that we've just started, and then we're gonna jumpstart to our discussion today. So today we're gonna solve more questions, and it's gonna be the mixed Python questions. So we're gonna do that. Okay. So we have prepared a list of I think 6-8 questions. So let's see how many we can take that today. So we'll be doing it the best we can. So I really want you guys to be active and please try to interact the best you can. I know it's a holiday for most of us, but again, I mean, whosoever is willing to learn, and then so an hour a day, it's like completely fine, I think. Cool. A quick hi or hello in the chat will be really great, guys. So I'll just get to know that whosoever is part of the chat. Anyway, let's we can quickly start. Cool. Just a quick round of introduction, guys. As you know, my name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I have almost 9 years of industry experience, and in this experience, I've been part of multiple domains. So I was in a manufacturing sector. I started with a banking client, so I was in the finance. I moved to cloud, was in automobile, then I am in telecommunication right now. So I've seen industry, so that's the main beauty of being part of the data science. So it opens up a lot of opportunities for you. So you kind of technically become immune to domains, but again, I am not promoting the fact that if you don't have a domain knowledge, being having a domain knowledge is of no use. No, it's not like that. Definitely, if you have a particular domain knowledge, you will be preferred in that selection process. But again, it does not mean that if you do not have a particular domain experience, you cannot get hired. Yeah, I mean, things might be tricky, but again, it depends on particularly your skill sets, and how are you specifically able to uh, convince your recruiters. So it's more of a vice versa process. I think it's pretty much evident, right? But again, that's all about that. But again, if you have anything which you want to talk about regarding data science, or because you might have heard it's a buzzword, so people are trying to jump into data science, and yeah, there are a lot of questions which are coming up, how we can do that and all that. So if you guys who are part of the lecture, so want to have any specific discussion on top of the data science part also, we can do that. And the prominent reason of us starting Python is data science, because in data science, initially even I started my journey with R. R is one of the another platform where the data science stuff can happen, right? But again, I would say, in my experience, I have observed that R is somewhat becoming obsolete. I won't say that it's completely out of market, but again, R is becoming obsolete, right? And people are moving towards Python. Even the entire code base of the existing solution on R are being moved to Python. The reason that is Python is very much flexible, right? And because ultimately the end objective is that you want to get the system running, right? If you are developing any predictive model on machine learning or data science, so you want that to be deployed so that the business can take benefit out of it, right? So that involves your another architectural blocks, and that's where Python comes very handy. It's very good language. So I mean, you can use that, and that is the reason why we started with Python. So that's our part of course content. We will be doing that. SQL, as I've already promised, so we'll be starting with SQL tomorrow. So in the weekends, we have the master classes, 4 hours, Saturdays and Sundays, 2 hours each. So we're going to be doing SQL from scratch. So, I mean, yeah, I'll be definitely talking about a bit of a theoretical concept of SQL, but again, I'll try to jump directly towards MySQL, so towards your workbench setup, and so we'll be doing some exercises hands-on there as well. But again, if you have any questions, you can
definitely push up your question. So, and I'm very much flexible with the content part, guys. So because SQL also, we got a feedback during our lecture that people are also looking for SQL. So that's why we started. But again, if you want anything else to be covered, so just put up your comments. So because we can modify that, but again, definitely not immediately tomorrow. But again, as with the time, we can plan that. Okay. And PySpark is definitely our future. So we'll be doing that as well. But once we are done with almost 80-90% of Python, so we'll be moving towards PySpark. It's almost a similar thing, guys, but again, towards a big data computation, like, server architecture, server and master. So it's more towards your distributed computation. So we'll be doing that as well. And you have this code right in front of your screen, which is Python 10. So with this, you can get a 10% off on your Plus subscription. So you can avail this benefit. But again, most prominently, you want to understand. So now, you know this. So Unacademy as a platform has launched another tech hiring platform, which is, I would say, a Relevel. So Relevel is one of the India's first tech hiring platform where it can help the students, the candidates get their dream jobs. So many a time candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. And it could be like maybe they don't have the right degree or they don't have the right networking. So degree, I mean, they definitely feel like, some of the companies have criteria on the tier A institutions, right? So yes, there are many opportunities which are being lost because they don't have the right degree or maybe poor networking. And also it could be case like, your resume is not getting shortlisted. So it could be like, there are, because 100 other applicants for the same job. So your resume is not, kind of standing out from the crowd. So you might feel that, you are losing out on that opportunity. So that could be another reason. And also we have observed that, there are like, even the students are applying for like 50, 60, or maybe 100, 200 odd jobs, still they're not getting the calls, right? So again, there could be a number of reasons behind this, which you cannot control, to be honest, but some of the things like resume, depending on your profile, it depends, right? So, I mean, there are a lot of things because of which, I mean, the candidates do lose out on the opportunities, right? So, and that is where Relevel has been introduced, guys. So it's the first tech hiring platform where the companies will reach out to you instead of you reaching out to the companies. And that's where it will help the job seekers to get their dream jobs. And here the jobs are completely dependent on your skills and talent. So you're not going to be dependent on any sort of networking events or any sort of, references or any sort of good degree from a tier A college. No, so it's purely based on your skills. So basically it's an assessment platform based on your profile, on your portfolio. You have to select your skill set and then you have to appear for an assessment, which is going to be, I think, 5 rounds of assessment. Details you can get to know once you sign up, right? And then once after doing this, you have to appear for the test, and then based on purely on this assessment score, your report card will be shared internally with the the tie-up organization. There are many organizations being tied up. So they will be reaching out to you along with your profile, and it's not like you have to just sit back and relax and they will reach out to you. So that's the importance of this Relevel platform. There are multiple benefits also which is involved being part of the Relevel test hiring platform, right? So, the over 50 plus companies, including the top startups and the unicorns as well, are having the tie-up with the Relevel platform. So these companies include the big guns also like E&Y and also Cred, Upgrad, Razorpay, Urban Company. So these are some good companies which have tie-ups with Relevel as a platform. So like when I'm saying tie-ups means they are hiring directly from the Relevel platform. And so Relevel platform is purely based on your skills and talent, right? It is purely based on your assessment score. So basically once you sign up on this platform, right, and once your assessment report card is also available, so that report card along with your profile will be automatically be shared or available kind of a platform, internal platform to these companies. And these companies will look out your profile and your report card. So basically your assessment score, and they will reach out to you depending on your scores, right? So that's the beauty of it. So you're purely be dependent on your skills and nothing else beyond that. And definitely there are 1,000 plus open job positions across 3 different portfolios at the moment. So it's a beta platform. So we have 3 different sections right now. So it involves business development, front-end development, and back-end development. And these individual portfolios does have multiple individual job profiles available. So I'll be talking about a few of them in the next slide. But again, so depending on your interest area, so you can select kind of a portfolio you want to be part of, and then you can definitely try to put out to the test and then just wait for the company's call. And right now, the best part of this is completely online, right? And there is no physical
a requirement of physical presence anywhere, right? So it's more, it's everything is online. So it's just like you can take your entire test and everything at the comfort from your home. So on your, in your best shape, you can take that. And that is the beauty of it. So, I mean, you're not expected to go out and somewhere. So you can take it with your own comfort level. So wherever you are comfort, when you are more comfortable, so you can take the assessment accordingly. And definitely so, and also the best part is you can take this for completely free right now. So it's a beta platform, as I've told you. So yeah, there might be a few charges later on, but right now it's completely free, right? And as I've told you, there are three sections right now, three portfolios: business development, front end, and the back end development. And the only thing which you have to keep in mind is you have to finish the entire test in a single day, right? So there are, I expect rounds, 5 individual rounds with importances. You'll be getting the details once you sign up, right? And then definitely, so the only expectation is you finish this test in a single day of your choice, right? And the report will be available within a week's time. So once you have given the assessment, so the reports card will be shared with you along, and also with the companies within a week's time, right? And once you clear the test with the qualifying score, so you will be, I mean, able to create an amazing candidate profile, guys, which will help you showcase your skills and stand out from the crowd, right? And something that stands out, you know, it always being noticed by the companies. And to get this Relevel profile, I would say the candidate has to score at least 70% marks. So right now, the total assessment score is of 1000. So you have to score 700. That's a qualifying criteria. But again, as you know, so higher the better, right? And also, I would tell you the candidates can take this test a number of times. But again, you have to always remember this. Like once you have paid for the test, you cannot take a retest within 30 days. So you can only take a retest after the 30th day of your current test date. Okay. So once you're planning for the test, so be in your best mental shape to appear for the test. So that's the expectation, right? And also along with this, the candidates will also be awarded with exciting goodies like MacBook, iPhone, and many more such exciting goodies for the highest rank holders in the Relevel test for a particular month. So on a particular category in that particular month, if you are one of the top highest scorers, you'll be getting some exciting goodies as well, right? And with Relevel, basically, you are in a unique position, guys, to invite interest from companies instead of you hunting down for the opportunities on your own. So you have to just sit back and relax once you have once you have given your tests. And so once you have your great score, the companies will reach out to you. So it's not like you are, you know, reaching out to the recruiters on the companies. It's that simple. And registering also is quite easy. So you have this website relevel.com and also available on the description of the YouTube video. So once you have signed up, you can select the test of your choice, right? So basically there are three sections, as I've told you: business development, front-end development, and back-end development. And you can see individual job opportunities available within these portfolios, and also the popular roles like, you know, business associate, a business development manager, customer engagement associate under the business development. And then we have Angular developer, web developer under front end. Back end, maybe we have research, back end engineer, Java engineer, or data engineer. So these are some very popular roles available in these portfolios. So based on your interest area, right? So you can choose the portfolio in which you want to be part of. And once you have selected the test of your choice, the next thing is going to be to book your slot when you want to give this Relevel test, right? And again, the slots are very limited, so I would suggest you to book it fast. So, and again, it'll be showing you all the available dates for your selected test, right? And once you've selected the date of your choice, you have to next create a neat video resume. Okay, so video resume, as you know, it's more of a talking about yourself kind of a thing. So you have to be well groomed and with a good ambient slide, good sound and all that, right? So you have to talk about yourself in like more about 30 seconds to 3 minutes of a video. So talk about some good things like why someone should hire you, right? So talk about like what are your achievements and what are your key skill sets, and maybe talk about a gist of one of the good projects you have done, right? So I mean, just talk about yourself and be very confident when you talk. So that's gonna be that's gonna matter much. And then once you have done that and you have the selected test of date, nothing like, so you have to just wait and relax and, you know, just wait for the D-Day. So be mentally prepared for your test date, and then, you know, just give your best and then wait for another week to get your assessment report, right? So definitely, guys, I would recommend you to register for Relevel today. It's, again, as I've said, it's completely free. So I mean, you're not being charged for it anyway. So it's a good platform. So you can just try it based on your interest, right?
And you know already this, so we have another Telegram open channel. So this will be having all the right details right in front of your screen. So you'll not have to run around here and there, right? So you'll be having all the right details, like what are the upcoming schedules, classes, and all the live updates on the same channel. So this is a single place stop for you to get all the updates. So I would definitely recommend you to be part of this channel. I mean, nothing being lost here again. As always, do not forget to like, share, and subscribe, guys. So, I mean, if you feel that you're getting benefited, so do feel free to motivate us as well. Cool. So now with this, we are on the content slide. So as we discussed, we're going to be doing some mixed practice questions. So we have a list of 6-8 questions. So we're going to be doing that. So again, before jumping into the questions, I just a hi or hello on the chat will be really good, so that I will get to know who all are part of our chat. And I would definitely recommend you guys to be active today. So we want the active participation, because if I keep on solving on my own, it does not really make sense, right? So ultimately at the end, you are supposed to solve the problems, right? It's not, I mean, what will happen if I keep on solving the problems on my own? So nothing will happen, right? So, I mean, you have to understand that it's for you, it's not for me, correct? So I would again recommend you to be really active in the chat. So just a quick hi or hello who are part of the chat. So that'll really help me so that we can jump towards our exercises. Cool. So with this, we are into our exercises. Anybody has any questions on whatever we discussed so far? So we did some good 4-5 questions yesterday on group buys. So you remember, right? We were doing some good exercises yesterday. I hope those points are pretty much clear, right? Any questions, anything which you feel like which I should be taking? So just do let me know. Or I mean, even if you're good, just say a yes that you are good, so we can jump ahead. So I mean, quickly take 30 seconds. If you have any questions from anywhere in the background, which you want me to repeat, or which you are not clarified with, so just let me know that. Cool. I think people are fine with that then. So let's jump to our first exercise question today. Okay. So as you can see, I have prepared a data frame. Okay. So let me just print this data frame. So let me just show it to you how it looks. Okay. So I have few of the things mentioned here. So I have 4 columns. So you can see this. I have ID, I have purchase amount, and I also have some of the missing values, guys. So do remember this. I used to know this. NaN, not a number, is basically a missing data in my column, right? And likewise, I have few other columns. So I have price products, I have number of products, and then basically the price of the products, and the purchase amount. So amount of that particular ID, basically. Cool. So this is my data frame, right? So now the question is this, basically. Let me pull it up here. So what I want, so I want the aggregation of purchase and the need total purchase amount. Okay, mean purchase amount, total purchase sold, and the mean of price of products sold. So I want a lot of things which I want to perform. So on this particular purchase data frame, okay. So whatever I want, what all I want. So I'll just write one by one. So I need total of purchase amount. Okay, this is the first ask. Then what I want the mean of purchase amount. Correct. Now what I want the total products sold. Okay, so basically num of products ka total chahiye mere ko. I'll do that. Okay. Then I want the mean of price for products sold. Now everything is ID wise. Cool. So this is my question.
Any issues here, guys? Any point which you want to talk about? So I want few things to be done here. So this is my purchase data. So I have ID as a column where the ID of my individual products is given. So basically individual product IDs. And then I want the purchase amount. So basically total of the purchase amount per ID, right? And then I want the mean of the purchase amount. And then I want the total number of products being sold. And then I want the mean of the price for products being sold and different IDs for so you have how many different products here. You can see that. So I have two different products, 123 and 124, right? So I have a few lot of things to be done here. So guys, quickly, any suggestions? What should be our approach here? So I'm gonna pull this DF upwards so that you'll be able to know this. So I have DF here. Cool. So this is my data frame. Now in this data frame, this is what the aggregations I want to perform. Quickly, guys, any suggestions? What all can be done here? So just a quick steps would be really great. So we can anyway solve this. But again, if whosoever are part of our chat today, so they can just initiate or do some of the suggestions. Even a simple English sentence would be great, guys. So I'm not expecting you to give a code to me, but again, even a simple, I mean, just the lingual way of writing the code also is completely fine. Any suggestions, guys? Anything which you feel like you want to add here? Cool. So, I mean, I see a quite less people being part of our chat today. So maybe because of the festival season. But again, that's fine. So I'll try to solve this for you. I mean, again, if anybody else has any questions, meanwhile, so I mean, do let me know so we can take that anyway. So whoever is part of the chat today. So like again, so let's try to prepare like what exactly we want, right? So basically what all things we are expected to do, right? So I'm just going to write a few things here and then we can frame it into our questions. So basically now you can see this under the purchase amount. I could see I have two things. So I need the total and also I need the mean, right? So two things on the purchase. On the number of products, I want again the sum, the total of my products being sold, right? And on this, on the price, I want the mean of the price. है ना? So price may be, okay, so yes, so price में I want the mean of my price, correct? So I want the price of the products का mean चाहिए मेरे को. Cool, ठीक है. So अभी काम करते हैं. Let's prepare the content which we want to perform. So सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो हम that so under the aggregate we prepare a dictionary, right? So just let's try to first add कि हमें क्या क्या करना है. तो हमारे पास the first column is I just add data frame here on top of this. Okay, I'll remove this. This is not required. Cool. So in this data frame हमें क्या करना है? Purchase में क्या क्या करना था? Purchase में I want total and mean, right? So अभी हमारे पास क्या है? Column का नाम है purchase amount. So in this purchase amount, what all I want? So I'm just preparing a key value pair, dictionary basically, right? So and I will put it into a dictionary. So in this I want what? Sum. So basically I want sum. Or I can pass, what? So sum is also under NP. So numpy, right? So np.sum. Let's use that. And rather I'll call numpy here on top of this so that it'll be easy for everyone. So numpy is another library, as you know that. So we're gonna anyway be starting numpy next week. So, but again, I'll be using it. It's a very commonly used library for a mathematical function. So I have numpy here of sum, and next thing what I want the mean, right? So yeah, so I want the mean. So I'll add the numpy.mean. Okay. So these functions I want for purchase amount. So purchase amount done हो गया. And the next क्या है मेरा? Basically need the total of in the purchase amount में I want
ओके, टोटल ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड द मीन ऑफ प्राइस। ओके, परचेज अमाउंट में तो मैंने कर लिया। सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड, सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का टोटल चाहिए। सो बेसिकली मेरा अमाउंट यहाँ पर ये है, हियर आई हैव what my column is num of products. Okay, so in this num of products ka I want the count, np dot count. But guys, just quickly notice this, अगर आप count करोगे on this, right, so basically आप अगर individually इसको count करोगे तो ये क्या करेगा, 1 और 2 दे देगा आपको, करेक्ट? दिस इज नॉट वी वांट, राइट? आई वांट, अगर मेरा यहाँ पे नैन है, बेसिकली अगर मेरा यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, सो मिसिंग वैल्यू को मैं काउंट नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज दैट्स नॉट विच इज अवेलेबल। सो इन दिस एनपी नंपाई के अंदर मेरे पास एक नॉन जीरो भी फंक्शन होता है। सो काउंट नॉन जीरो अगर मैं करूंगा, सो बेसिकली जहां पे भी वो जीरो होगा, और मतलब जहां पे भी वैल्यू नहीं होगी, इट वोंट काउंट इट। ओके, सो इट विल ओनली काउंट वेयर द वैल्यूज आर। सो दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताना। And then next I have my price of the product. So price of the products में क्या करना है, price, okay, now total products, so price of the products में I want the mean, ठीक है? So ठीक है, so मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। So I have what, price of products में I want NP का mean, ठीक है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। एंड दिस होल थिंग इज माई डिक्शनरी। सो इसको मैं एक डिक्शनरी के अंदर एनक्लोज कर देता हूं, ठीक है? डिक्शनरी बन गई, और इस डिक्शनरी को मैं एक नाम दे देता हूं, बेसिकली एक एग्रीगेशन की एक डिक्शनरी है मेरी, है ना? और मेरे को यही एक्शन परफॉर्म करना है बेसिकली, राइट? सो आई विल पास दिस एग्रीगेशन डिक्शनरी ऑन टॉप ऑफ माई ग्रुप बाय का फंक्शन, करेक्ट? सो चलो अब मैं इसको काम करता हूं। अब मेरे को क्या करना है, df डॉट ग्रुप बाय, I mean, see, again, the reason I created this, guys, because it becomes, the code becomes quite readable, and you'll be more comfortable, while solving the problem, है ना? So it's actually more readable. I mean, future में भी जब आप coding करोगे ना, so always try to prepare this dictionary beforehand, because it's quite clear, है ना? So it becomes more readable, and you will also not forget क्या miss कर रहा हूँ मैं for my code and all that. So likewise, it becomes very important. आई मीन, इसको मैं थोड़ा रीडेबल बना दूँ। अगेन नम प्रोडक्ट्स हो गया, एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइस का प्रोडक्ट है। सो अगेन आई हैव जस्ट एडेड फ्यू टैब्स हियर टू मेक इट मोर रीडेबल। उससे कोई इशू नहीं है, पाइथन का में टैब्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो ग्रुप बाय, अगेन ग्रुप बाय कैसे करना है, मेरे को आईडी के अगेंस्ट करना है, राइट? सो आईडी के वाइज करना है हमें, एंड देन ऑन दिस एग्रीगेटेड फंक्शन आई कैन पास दिस एग्रीगेट डिक्ट, राइट? दिस इज व्हाट वी वांट। करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास। अरे एग्रीगेट डिक्ट ही नहीं रन किया हमने, ठीक है? एग्जैक्टली हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये इंडिविजुअल आ गया। सपोज एग्जैक्टली मैं काउंट नॉन जीरो क्यों करना चाह रहा था, आपके पास आपको दिख रहा होगा, बिकॉज अब यहाँ पे मेरे को 2 और नैन को ऐड नहीं करना था, मेरे को 2 को सिर्फ ऐड करना था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ काउंट करता तो मेरे को 3 दे देता, ये 2 प्लस ये नैन को भी एक इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट करता, बिकॉज इट्स अगेन वन ऑफ द ग्रुप बाय का एलिमेंट्स, है ना? सो दिस इज द रीजन व्हाई मिसिंग डेटा इज वन ऑफ द ट्रिकी थिंग्स इन डेटा साइंस पार्ट। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कौन सा डेटा मिसिंग है, एंड अगर आपको उसको यूज करना है तो किस तरीके से यूज करना है, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो किस तरीके से रिप्लेस करना है, और यूज नहीं करना है, ड्रॉप करना है तो कैसे करना है ना? सो ऑलवेज बी वेरी श्योर कि आपके पास मिसिंग डेटा कहाँ पर है और किस तरीके से आपको एग्रीगेशन परफॉर्म करना है उसके ऊपर, ठीक है? सो ये हमारे पास अभी आईडी हो गया, और अभी भी हम एग्रीगेट कर रहे हैं ऑन एग्रीगेट डिक्ट। सो ये मैंने परफॉर्म किया, तो ये मेरे को आईडी के ऊपर ये निकल करके आ गया, है ना? अब गाइस, अब इसमें एक जो मुझे इशू दिख रही है कि अभी अगर मैं इसको इंडेक्स करना चाहूं, अभी बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देयर इज अ गैप हियर, सो आई कैन सी द डेटा कॉलम नेम्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। आई एम सीइंग मल्टीपल थिंग्स। सो आईडी तो एक मेरा आइडेंटिकल, ये तो मेरा इंडेक्स हो गया बेसिकली, है ना? बट नाउ आई एम सीइंग दिस परचेज अमाउंट और सम और मीन, ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग है कॉलम में, करेक्ट? अब इसको फ्लैटन कैसे करेंगे? अब आई मीन बेसिकली आई वांट अ डेटा फ्रेम टाइप ऑफ अ थिंग, जहां पे मैं
कॉलम और रो को इंडेक्स कर सकूं. सो वो तो अभी नहीं हो सकता यहाँ पे. सिंपल से आपको मैंने रीसेट इंडेक्स भी बताया था. एक बार रीसेट इंडेक्स ट्राई कर लेते हैं. उससे रीसेट इंडेक्स से क्या आता है आउटपुट. देखो नाउ. Okay, one thing has been sorted now. So the only difference, okay, let me show you to the difference also. Okay, so now you can see the difference here. So you can see this here, this ID is an index, right? Because I am grouping by based on ID. So this ID has individual unique elements of my ID has become the index, right? So that's the key for my individual rows, right? So that is the reason why it has been used as an index here. But once I did a reset index, now this index has been resetted and I'm using this original indexing as part of my column, right? If you remember, if I use drop is equal to true here, so that will drop the original indexing. So original indexing is ID, which I need. So I cannot drop this, right? So that is the reason why I'm not using drop is equal to true, right? So I'm using the original indexing also. So that is the reason why I did a reset index. But again, this is also not sorted, guys, right? So I mean, if you just see the column names here, so let me just use it likewise. So I'll rather save it to you and show it to the columns. So suppose I'm saving it's like some say df. No, I won't say df new है ना. So df new जो है मैं इसको ऐसे सेव कर देता हूँ, करेक्ट. And then let's see the df new का columns. You can see this. So I have multi-index levels. Basically, दो levels में मेरे पास column का नाम आ रहा है. So the first level is this. So purchase amount, num products, product price, product and ID. ये first level है जो मेरे को ऊपर में दिख रहा है, right? And now I have a second level also जिसमें mean है, count non-zero है, mean है, sum है, and एक missing data भी है. Missing यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा एक missing data भी है, right? So this is not what we want, right? I want it to be flattened, correct? So ये मेरे को flattened data में चाहिए, एक single data frame हो. तो कैसे कर सकते हैं इसको? So again guys, there are multiple ways to be honest of doing this. There's not a single way. I mean इसको आप multiple तरीके से कर सकते हो. Let me just show it to you the first way. So, अब जैसे कि suppose मेरे पास columns है ना, आप इनफैक्ट column dot values भी कर सकते हो. यहाँ पे आप जैसे column dot values करोगे तो multiple index का एक एक करके वो array में दिखाएगा, ठीक है. So अब देखो values क्या करे, तो basically values क्या कर रहा है, ये पूरे एक entity को एक couple करके दिखा रहा है. So basically आप दिख रहा होगा एक array element return कर रहा है. So I have in the first column, I have two things, ID and a blank, right? So that's what it is showing. It is a tuple element, right? And then the second is purchase amount and sum. So this is what it is showing me as a second column name, right? The third is likewise purchase amount and mean and likewise others, right? So now what I can do is maybe I can try to join these things. So basically purchase amount underscore sum likewise, or I can say that purchase amount underscore mean, or I can say num of products underscore of count of non-zero. So if I want to use these keywords like sum, mean, non-zero as part of my column name itself, so I can just simply join these, right? So I have two things here. ID, I mean, इसको blank को join करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, right? So but again, I can join these column names, right? So I can do that. So I mean that's the first way. I mean if we want to use the same column names, so इसमें हम क्या कैसे use कर सकते हैं? So basically on top of this, if I run, so I can create a list of first of all names, and this list would be having what? Just a minute, my bad. So this is my overall thing. So what I want here, I'm saying I want the column names which I want. So I want to join. So join कैसे करते हैं? अगर if you want to join something in string, so you can use directly as a join function, right? So join कैसे करते हैं? Join on what? So basically I want to use underscore as my criteria, for example. So I want to be join this purchase amount underscore sum or hyphen sum or dot sum, whatever my concatenation or joining criteria is, I can use that as a joining criteria. So I want supposed to be joined under underscore. So underscore use kar lete. Underscore is more efficient. I mean more, I would say readable type of a thing. So I have underscore dot join, है ना? So join किस पे कर रहा हूँ? For, so I want to loop on this. So basically for say column in this. So this is my looping criteria. आपको पता है ना, जब when you want to use this in a single line, I've already told you, for always goes in the last and everything else will come in the first. So
जनरली जब आप सिंगल लाइन में जब आप मल्टीपल लाइंस में लिखते हो तो फॉर पहले होता है एंड देन यू राइट योर कोड लाइक इफ एल्स व्हाटएवर, बट इफ यू राइटिंग थिंग्स इन द सिंगल लाइन ऑफ अ कोड, फॉर ऑलवेज गोज इन द लास्ट, है ना, ये ट्रिक हमने ऑलरेडी सीख रखा है। सो हमने फॉर को बाद में रखा। So now I want to iterate it over this column ka values, right? So I can use for call in this. So basically, I can use this and then I can pass inside the call value. So I mean individual elements of individual elements of my dot columns. देखते हैं एक बार इससे क्या return होता है. Okay, can you see this? So now I have a list of a column. So I can see this. I have added my all the elements. So basically जो हमें individual individual elements मिल रहा था एक multi index में, I have just concatenated those values using an underscore, है ना. So now I have this column name, purchase, amount, sum, this and all that. So now this is a list of my names, right? So now I can directly pass this list of my names as my column names. I can do that. So I have a function here, so I can use this. So I have this df underscore new, right? So let me just show it to you first separately, and suppose, so as you remember, so df of new dot columns, ये इसके थ्रू हम कॉलम्स लेकर के आते हैं, राइट? ये मेरा कॉलम्स है। अगर इस कॉलम्स को मैं डायरेक्टली बोल दूं कि ये लिस्ट को उठा लो, this should work, right? So because ultimately columns ka I'm getting my columns ka data. So now let's see how the df underscore new looks like. Cool. So I have flattened my data. So I have the flattened data now. So in which now agar main is pe dot columns karunga, so in this dot columns I'll be getting the list of exactly those IDs or those columns which I want to be indexed on, right? So I have just another simple way of flattening it. See, again, there are another, so you can do it like this also. Like for example, you have some user defined name. Okay, so you can create your own list here, say ID, and then you can create, say, okay, so the second is p amount, array yaar. So you can write, say, p amount, and then under you can write sum, right? And then likewise you can also add p amount underscore mean, and then you can add, say, n product underscore count, and then I have what, price pro underscore mean, है ना. मैं एक यूजर डिफाइंड भी दे सकता हूं एक्सटर्नली पास, बिकॉज अल्टीमेटली ये भी क्या कर रहा है, एक लिस्ट ऑफ नेम्स बना रहा है ना. सो आई कैन ऑल्सो पास एन एक्सटर्नल लिस्ट ऑफ नेम्स ऑन टॉप ऑफ दैट एज माई df new का कॉलम्स. आई कैन डू दिस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो फाइन. मैं एक बार आपको ये भी शो कर देता हूँ, है ना. आप ये भी कर सकते हो. अगर अगेन आप इस केस में अगर आप ये df new का कॉलम्स देखोगे तो डेफिनेटली जो आपने नया बनाया है अभी वो निकल के आएगा, है ना. This is my new columns now, and if you see this df new also, you'll be able to see the new columns ka header, है ना. So both of the ways are fine. As I've said, no way of doing coding in Python is wrong. So none of the way is wrong. So you can do it in either way, whatever you feel like. इसमें कोई issue नहीं है. But again, it should be like, you know, you ultimately you are able to achieve what you want to do, है ना. So that's the only thing. कूल. आई थिंक इसमें तो कोई इशू नहीं है गाइस. ये हम सिंपल ग्रुप बाय कर रहे हैं. सो ग्रुप बाय में हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज को नोट करना है हमेशा, आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है. बिकॉज पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल एक कॉलम पे मीन कर रहे थे, मीडियन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मैक्सिमम वगैरह कर रहे थे, राइट. बट हियर इसमें मल्टीपल कॉलम्स में अलग अलग चीजें करनी है. तो हमें इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन सेपरेटली. बिकॉज उसमें क्या होता है, जब आप एक सिंगल कोड में लिखते हो ना, some of the times you miss out on the things, or some of the times you kind of write the incorrect information which you don't intend to do, है ना. So to get to save your time, it's always good कि आप एक separate dictionary बना लो and then you run it on top of that. So that's how we did it, है ना. So हमने एक डिक्शनरी बना लिया and then eventually we passed this dictionary on top of my group by key, which is my ID, and we have run that. We got this data, we flattened it. So we learned how we can flatten it. So basically to get the indexed a single index column, so we did that. So two ways. We used the same names here, just we ran a loop and concatenated by using underscore or whatever you want, maybe a space or
whatever you want. You can do it likewise. So because again, it's creating a list of my names, right? So I'm passing it under a list. So that's my list of my elements. And also you can also pass an external list of elements, whatever you want. So that is also possible. Cool. So ये हमने करा. Next question करते हैं guys. So now in this similar thing, but again थोड़ा tricky है ये. इसमें मुझे क्या करना है? So I have this data frame again. एक बार data frame check कर लेते हैं. I've this data frame. So now in this I have again 4 different columns. ठीक है? ID है, balance है, ATM drawings है, and then value है. So basically I have 4 different columns here. Cool. ID, balance, ATM drawings and value. ठीक है? Now इसमें मैं क्या करना चाहता हूं कि I want to aggregate basically mean and sum चाहिए मुझे चाहिए per of balance and ATM per ID. करेक्ट? सो मेरे को दोनों का बैलेंस एंड ATM ड्रॉइंग्स का मीन चाहिए, मीन एंड सम चाहिए, बोथ चाहिए. बट हम इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक भी लगाएंगे बिकॉज वी हैव लर्न ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी हमने पढ़ा है, राइट? सो ट्रांसफॉर्म भी सिमिलर करता है बिकॉज ट्रांसफॉर्म को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब इट स्विचेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा उसके ऊपर वो भी कर सकते हैं. सो ग्रुप बाई तो है ही है, बट ग्रुप बाई के ऊपर आप ट्रांसफॉर्म भी पास कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग्रीगेट. सो एग्रीगेट से भी करेंगे इसको एंड ट्रांसफॉर्म से भी करेंगे. ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें? आई मीन एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट, सो वी कैन टेक दैट क्वेश्चन, और इफ पीपल आर फाइन सो वी कैन जंप टू आवर सॉल्विंग पार्ट. ठीक है, पहले इसमें आई थिंक किसी को क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन विथ, पहले ग्रुप बाई से ही करते हैं. लेट्स डू इट विथ ग्रुप बाई. सो फर्स्ट हम करेंगे ऑप्शन 1 यूजिंग ग्रुप बाई एग्रीगेट. ठीक है, अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, हम पहले वो एग्रीगेट का डिक्शनरी बनाएंगे बिकॉज इट्स ऑलवेज इजी टू यूज दिस एग्रीगेट डिक्शनरी. हमें वो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है ना, बिकॉज हम इसमें करना क्या चाहते हैं. सो हमें क्या क्या चाहिए? सम एंड मीन चाहिए ऑफ माई बैलेंस एंड ATM का ड्रॉइंग्स. ठीक है, सो अभी आई हैव बैलेंस हियर. सिंपल है, अभी तो इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. बैलेंस का मेरे को सॉरी आई हैव अ की वैल्यू पेयर, सो की में हमेशा कोलन देते हैं. कोलन में आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग टू पास. सो हियर अभी हम सम मीन तो डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, इंटरनली भी अवेलेबल है हमारे पास, सो वी कैन यूज सम एंड मीन, इसमें कोई इशू नहीं है. एंड देन नेक्स्ट आई हैव व्हाट? आई हैव ATM का ड्रॉइंग्स. ठीक है, आई हैव व्हाट अगेन टू डू सम एंड आई कैन डू मीन, है ना? सो ये मेरी डिक्शनरी बन गई. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है ना? ये मेरा डिक्शनरी बन गया. सो अब हम डिक्शनरी के ऊपर आपका क्या करेंगे यार? ग्रुप बाई कर लेते हैं. df डॉट ग्रुप बाई ऑन ID. देन आप इसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन को पास करोगे. एग्रीगेट के अंदर एग्रीगेट डिक्ट आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और इसको रन कर लेते हैं. ये आ गई. अब इसको एक बार वापस से रीसेट इंडेक्स कर लेते हैं. तो रीसेट इंडेक्स में ID मेरे पास एज अ कॉलम नेम आ जाएगा. करेक्ट, कोई इशू नहीं. अगेन वो फ्लैटन वाला इशू है, तो फ्लैटन का सेम वो लॉजिक लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना? इसको भी एक df अंडरस्कोर न्यू में सेव कर लेते हैं. एंड देन यहाँ पे मैं df अंडरस्कोर न्यू के कॉलम्स को बोल देता हूँ अंडरस्कोर डॉट जॉइन कॉल. ओके, नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा. फॉर कॉल इन df अंडरस्कोर न्यू डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज, है ना? ये ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. अब एक बार df अंडरस्कोर न्यू को यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं. लेट्स सी दिस. दिस शुड वर्क लाइक अ चार्म. कूल. सो वी हैव दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू. सिंपल है. ये तो हमने सेम चीज ऑलरेडी पढ़ा था पहले, ये हमने करा हुआ है. अब गाइस क्वेश्चन इज, अब इसमें ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं.
थोड़ा सा लंबा है ट्रांसफॉर्म से करना, बट अगेन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट आप ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो अगर ग्रुप बाय एग्रीगेट में कुछ इशू आने लगता है, बिकॉज यू नो समटाइम्स इफ देयर द नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर एंड द फंक्शनैलिटीज व्हिच यू वांट टू रन ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिविजुअल कॉलम्स आर डिफरेंट, मे बी लैम्डा वैम्डा कुछ ऐड हो जाता है, तो थोड़ा मैं एंड समटाइम्स इट गेट्स लिटिल ट्रिकी, लिटिल कंफ्यूजिंग, ऑल्सो रीनेम वीनेम भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगेन इन दैट केस यू कैन यूज ग्रुप बाय ट्रांसफॉर्म ऑल्सो। थोड़ा सा लेंदी होता है ट्रांसफॉर्म बिकॉज आपको सेपरेट कॉलम इंडिविजुअली बनाना पड़ेगा इसमें, और नथिंग फैंसी, अगेन इसमें कुछ ऐसी इशू नहीं है, बट अगेन यू कैन क्रिएट द न्यू कॉलम ऑल टुगेदर, सो वी कैन डू दैट, लेट्स ट्राई टू डू दैट इनफैक्ट ना। सो अभी वो करते हैं, ट्रांसफॉर्म से करते हैं, आई शो इट टू कैसे करेंगे। सो सबसे पहले आपको एक ग्रुप बाय तो करना ही, बिकॉज आपको पर आईडी चाहिए, राइट। सो df डॉट ग्रुप बाय, आई हैव df डॉट ग्रुप बाय फ्रॉम बेस्ड ऑन आईडी, so this is id, right? So this is my group by element, and इसको मैं काम करता हूँ एक ग्रुप बाय एलिमेंट में सेव कर लेता हूँ। so let's say for example gb ग्रुप बाय एलिमेंट है ना, दिस माई ग्रुप बाय एलिमेंट। अब इस ग्रुप बाय एलिमेंट के अंदर मेरे पास हर एक का कॉलम है, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म बनाता चला जाऊंगा। so अभी मैं df ही यूज करता हूँ, df का एक न्यू कॉलम बनाता हूँ, df का न्यू कॉलम बनाता हूँ बैलेंस का मीन, ठीक है, बैलेंस का मीन चाहिए मुझे अगर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय एलिमेंट है मेरे पास, ग्रुप बाय एलिमेंट में से बैलेंस लेना पड़ेगा, एंड देन बैलेंस का मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म का मीन करना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट, कूल, इसमें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इस ग्रुप बाय एलिमेंट से मैं बैलेंस ले रहा हूँ और हर एक ग्रुप का को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ऑफ मीन, सो बेसिकली इंडिविजुअली वो ऐड करता चला जाएगा, और मैं इस प्योर डेटा के अंदर उसको ऐड कर रहा हूँ। सो मतलब अभी ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे 4 रोज है, तो चारों पे मैं ऐड कर रहा हूँ, बट इसको बाद में फिर मैं ड्रॉप करूंगा, आई विल शो इट यू कैसे कर सकते हैं। सो अभी बिकॉज समहाउ आई हैव टू ऐड रहा, सो अभी मैं उसी को यूज कर लेता हूँ df, और इसमें नाउ बैलेंस का मेरे को सम बनाना पड़ेगा। सो सम हम कैसे बनाएंगे, gb का मेरे को लेना पड़ेगा अगेन बैलेंस एंड देन इसमें मेरे को करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म का सम, कूल, इसमें कोई इशू नहीं है, एंड देन लाइकवाइज हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरे को चाहिए इसमें ATM ड्राइंग्स है ना, तो मेरे को इसमें करना पड़ेगा ATM ड्राइंग्स, ये ना ATM ड्राइंग्स, डी स्मॉल है तो वही रखते, कॉपी करने में ईजी होगा। सो ATM ड्राइंग्स हो गया मेरे पास, सो मेरे को ATM ड्राइंग्स का यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, ATM ड्राइंग्स का मेरे को मीन चाहिए, ठीक है, एंड देन ATM ड्राइंग्स का मेरे को सम चाहिए, और सिमिलरली मैं यहाँ पे कॉलम का नाम भी चेंज कर देता हूँ ATM ड्राइंग्स डॉट सम, इसमें किसी को इशू नहीं। तो बेसिकली आई हैव क्रिएटेड 4 न्यू एडिशनल कॉलम्स, ठीक है। अब एक बार पहले यहाँ पे DF देख लेते हैं, देखो अब उसी के देखो बैलेंस, अब ये तो मेरा इंडिविजुअल डेटा था है ना, अब इसके अगेंस्ट में मेरे पास 4 और कॉलम ऐड हो गए जो हमने बनाया अभी, बैलेंस का मीन सम और ATM ड्राइंग्स का मीन सम, आपको दिख रहा है, ये देखो रिपीटेड हो गए कॉलम यहाँ पे 125 125, बिकॉज ये दोनों सेम आईडी से होंगे है ना, 1 1 से और ये 2 2 से है ना, तो बेसिकली रिपीट होते चले जा रहा है, करेक्ट। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअली इसमें रोज भी उठा सकते हैं, लाइक सिंपल df डॉट लॉक भी कर सकते हैं, फिर ड्रॉप डुप्लीकेट्स में आप क्या कहते हैं इसको, एक ड्रॉप डुप्लीकेट्स में कीप लास्ट भी कर सकते हो, कीप 1 भी कर सकते हो, सिंपल दोनों तरीके से कर सकते हैं। लॉक से हमने पढ़ा है, लॉक से एक बार ट्राई करते हैं, लॉक से भी सिंपल है। सो लॉक से मेरे को क्या चाहिए, अब इसके ऊपर मेरे को कॉलम 0 रो 0 चाहिए, रो 2 चाहिए, सो मैंने डायरेक्टली इंडेक्स पास कर दिया, और इसके अंदर मेरे को कॉलम क्या क्या चाहिए, मेरे को ID चाहिए, एंड देन एक एक करके ऐड करते चले जाते हैं। मेरे को सम ऑफ मीन चाहिए, बैलेंस का मीन चाहिए, ये मैंने ऐड कर दिया, फिर मेरे को बैलेंस का सम भी चाहिए, ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ATM ड्राइंग्स का मीन चाहिए, ये भी ऐड कर दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने पास ये भी सम भी चाहिए, कूल है। अगर आप इसको भी रन करोगे तो आपको सेव डेटा मिलेगा, जो आपको ऊपर मिला हुआ है ना, ये इनफैक्ट ये आपने यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करा है एक एक, सो ग्रुप बाय भी डिपेंडेंट नहीं है, आप इसके ऊपर भी रीसेट इंडेक्स कर सकते हो, बिकॉज 0 और 2 दिख रहा होगा आपको, तो
reset index, इसमें ड्रॉप टू कर देते हैं बिकॉज मेरे को ओरिजिनल इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना। ड्रॉप टू कर दिया तो मेरे को इंडेक्स सॉर्टेड करके मिल जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं, ये सिंपल है। बट अगेन आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसफॉर्म से काफी लेंदी है, बिकॉज अब सपोज मेरे को मल्टीपल चीजें करनी है और एन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट क्योंकि आप इंडिविजुअल कॉलम्स को यहाँ पे डिफरेंटली क्रिएट करोगे ना, सो क्रिएटिंग मल्टीपल कॉलम्स सेपरेटली हियर, so that will add a benefit, that will be a little beneficial, considering the fact that if you want to add a lot of functionalities under a single aggregate dict, right? So that might create some confusion because it'll keep on adding on the similar code data line, right? So थोड़ा सा अगर if you are able to understand that code, fair enough, that's the, I would say, the more recommended way. But again, if you are still confused and you want to create separate column altogether, and because as I've said, no way is wrong, all the ways are right if you are able to get the answer. Okay, the only way we can judge a Python code is through its optimization standards, coding standards, है ना? I mean ये हाँ ये standard नहीं है, I mean I would say that this, अगर आप transform करो थोड़ा सा lengthy हो जाता है, this is not, I would say, because and there are multiple lines of code as well, so I would say this is not optimized way of writing your code, so that is the only way it is different, but again it's not wrong, है ना? You can do this way, and as I've said, I could have used drop duplicates also at the end, so that would have still worked, but again I still try to stick to as much as possible to the basic logics, you know. So again, I don't want you guys to be very much dependent on any function for your answers. Okay, so that's not what we want. Cool. कोई issue है किसी को, guys? I know people are I mean enjoying their holiday, so we have very less audience today, but it's fine. I mean, I'm okay with that, as long as people are able to learn and watch the video later also, that's fine. ठीक है, ये तो simple है. Thank you Abhishek, thank you so much for being with us. I just noticed the chat. ठीक है, चलो next question करते हैं guys. Cool. So I have this question now. So let me just pull up the data frame again for you and show you the data first and then the code. Okay. So I have this new data frame now. So I have I have 5 different columns here. So I've created item, shop 1, shop 2, shop 3, and the category of that item. है ना? So now I want the same things, aggregate of prices per category. So aggregate of prices per category. So here the trick is, the first is I want per shop. So per shop तो आपको दिख रहा है कि वो separate columns में है, तो वो थोड़ा easy है because same way में जैसे हमने aggregate पहले करा हुआ है, हमने वो चाहिए. Now the second one is tricky, the aggregated shop. So basically I want the aggregation of my prices per category across all the shops also. So there are 2 sub questions in this. First is I want it per shop. So per shop is still fine. So okay, I've done this shop of spelling is wrong. So it's per shop, right? So I want it per shop. So basically shop 1, shop 2, shop 3 का मेरे को aggregate of prices चाहिए. So ठीक है, we'll do that. So aggregate में basically मैं क्या बोल रहा हूँ, some mean निकाल लेते हैं, standard deviation निकाल लेते हैं. So let's put some aggregation things here. So maybe let's put, say, I want some mean and I want, say, standard deviation new. Okay. So I want these 3 to be done per shop and across all the shops also. So ठीक है, let's solve this. सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, इसको पहले हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व करते हैं. Let's solve this. My first say, so aggregation per shop. ठीक है. So now I have items, category के ऊपर items भी है ना? So items का भी कुछ कर लेते हैं. So 1 2 3 4 TV and phone technology में काम करते हैं, सिर्फ प्राइस का नहीं रखते हैं. Let's add one more thing here. So I want आइटम का भी एग्रीगेशन कर लेते हैं. आइटम का एग्रीगेशन होगा आइटम एग्रीगेशन फॉर नंबर्स में भी, है ना? सो काउंट एग्रीगेशन फॉर काउंट और साइज सब सेम ही है.
है ना. सो लेट्स डू दैट. सो बेसिकली नाउ आई हैव टू थिंग्स. सो प्राइस का भी मेरे को करना है, पर शॉप प्राइस का सम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं. एंड आइटम का बेसिकली आई जस्ट रियलाइज द आइटम में भी वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज हियर. सो क्लॉथ्स है, एंड देन क्लोथ्स है, टेक्नोलॉजी में आई हैव रिपीटेशंस, टीवी एंड फोन, राइट. सो वी कैन डू सम काइंड ऑफ काउंटिंग ऑफ माई पर आइटम पर कैटेगरी ऑल्सो, है ना. वी कैन डू दैट. सो सबसे पहले करते हैं पर शॉप. पर शॉप सिंपल है बिकॉज ये तो आपको पता है सेम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, तो सिंपल एग्रीगेट डिक्शनरी से बन जाएगा. तो इसको क्विकली खत्म करते हैं. अगेन एज आई सेड, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर एग्रीगेट डिक्शनरी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड टू जंप इनटू योर कोड. सो एग्रीगेट डिक्शनरी डिक्शनरी होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं इसमें, राइट. सो की वैल्यू पेयर में सबसे पहले की आपका क्या होगा, की में है मेरे पास आइटम. सो आइटम की बेसिकली इज अ कॉलम नेम, है ना. एंड देन अरे यार, एंड देन आपका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू विल बी व्हाट फंक्शन यू वांट टू परफॉर्म ऑन दिस. सो फंक्शन आई वांट टू परफॉर्म इज से साइज इनबिल्ट होता है, सो साइज चल जाएगा. ठीक है. सो साइज आई वांट टू नो द साइज ऑफ इट. साइज बेसिकली आपका काउंट ही बताता है, सो साइज आई थिंक बट काउंट ओनली. सो ये हो गया. एंड देन आई हैव व्हाट, आई हैव शॉप वन. सो SHOP, shop one. And in this shop one I want to perform what, I want to perform some, अरे यार, some, I want, वो क्या क्या बोला था मैंने, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना. मीन भी कर लेते हैं, एंड देन आई वांट स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लेते हैं. चलो इसको सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज ये तो रिपीटेड है. तो ये हो गया यहाँ पे शॉप 2 के लिए, एंड देन यहाँ पे हो गया शॉप 3 के लिए. तो इसको रिप्लेस कर देते हैं शॉप 2 एंड देन शॉप 3. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वांट, है ना. ये तो एग्रीगेट डिक्शनरी है मेरी, तो सिंपल है, इसमें तो कोई भी इशू नहीं है किसी को भी. एग्रीगेट डिक्शनरी बन गई मेरी. अब सेम को मैं एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर पास करता हूँ. सो df डॉट ग्रुप बाय के अंदर आई एम सेइंग आई वांट टू ग्रुप बाय बेस्ड ऑन व्हाट कैटेगरी. सो इसके अंदर मेरा अरे क्या, सो मेरा आ जाएगा इसमें कैटेगरी एंड देन आई वांट ऑन द एग्रीगेट फंक्शन आई वांट टू पास द एग्रीगेट का डिक्शनरी. तो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. कूल. लेट्स ट्राई टू सी दिस क्विकली. ठीक है. सो यू हैव व्हाट, सो कैटेगरीज आ गई, बुक्स, क्लोथ्स एंड टेक्नोलॉजी, है ना. आइटम का मैंने साइज निकाला हुआ है. टेक्नोलॉजी में मेरे पास 2 है बिकॉज हमने देखा था टेक्नोलॉजी में 2 दिख रहे थे मुझे, इसलिए मैंने साइज ऐड किया था. टीवी एंड फोन यहाँ पे है, राइट. सो टेक्नोलॉजी में सम, शॉप 1 का सम आपको दिख रहा होगा. शॉप 1 का सम 200 प्लस 300 क्या होगा, 500 होगा. तो 500 है यहाँ पे, है ना. सो लाइकवाइज अक्रॉस द शॉप, तो शॉप 1 का सम मीन है यहाँ पे, शॉप 2 का है, शॉप 3 का है. सो अगेन सिंपल, फटाफट इसको हम कॉलम का नाम भी चेंज कर लेते हैं. सो इसको मैं df अंडरस्कोर न्यू में सेव कर लेता हूँ एज ऑलवेज. df न्यू डॉट कॉलम्स में क्या हो जाएगा मेरे पास, चलो वैसे यूज़ कर लेते हैं अंडरस्कोर, नहीं नहीं पहले तो ये होगा, इसमें मेरे को अंडरस्कोर से ऐड करना पड़ेगा. अंडरस्कोर डॉट जॉइन में कॉल पास करूँगा मैं फॉर कॉल इन df अंडरस्कोर न्यू डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज. ठीक है. सिंपल है. df अंडरस्कोर न्यू को मैं चेक कर लेता हूँ. अच्छा, उसको मैंने रीसेट इंडेक्स तो पहले करा ही नहीं है. रीसेट इंडेक्स भी बहुत ज़रूरी है गाइस बिकॉज मेरा इंडेक्स यहाँ पे कैटेगरी है. कैटेगरी तो लॉस्ट हो जाएगा अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा इसको. तो सो रीसेट इंडेक्स इज मैंडेटरी हियर. सो रीसेट इंडेक्स, आई जस्ट रियलाइज दैट. सो रीसेट इंडेक्स डाल दिया मैंने. अब मैं df न्यू को देख लेता हूँ तो फटाफट हो जाएगा आई थिंक, करेक्ट. या कूल गाइस, इसमें मेरे पास सब कुछ आ गया, कोई इशू नहीं है. शॉप 3 में स्टैंडर्ड डेविएशन में नैन क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है. अच्छा कूल. सो देखो शॉप स्टैंडर्ड डेविएशन में मेरे पास यहाँ पे नैन क्यों आ रहा है. मेरे पास कोई चैट में अवेलेबल है क्या, कोई भी वॉच कर रहा है. अभिषेक, इफ यू आर स्टिल देयर, can you tell me why exactly we are getting nan in the standard deviation of my individual shops, shop 1, shop 2 and shop 3 में for the categories books and clothes, why I am getting nan here. कोई आइडिया है, any idea? It's a good observation. I mean, if you can tell this, that'll be really good. So I mean, if you can just tell this, I'll wait for you for 15 more seconds. If you know this, just drop an answer. Otherwise, or whosoever is part of the chat, I saw people more joined in.
गाइस सिंपल है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आप कब निकालोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइक द डेविएशन फ्रॉम योर मीन बेसिकली, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर, उसका रूट ओवर, वेरिएंस का रूट ओवर। सो नाउ व्हाट यू डू हियर इन स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपके पास डेटा पॉइंट ही सिंगल है, दो डेटा पॉइंट ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे? हाउ विल यू, कैन यू कैलकुलेट अ मीन फॉर अ स्केलर वैल्यू? You cannot, right? You need a list of values to calculate a mean, correct? So likewise, this is the reason why it is important. So you cannot have a mean value calculated on a single scalar value. So उसके लिए list of values होना बहुत जरूरी है, ठीक है? So that is why we have this nan here. So I have a single element. It should be at least two, minimum two, to calculate the standard deviation. Minimum two चाहिए elements for your standard deviation का calculation, to calculate the mean also. That's the basic funda. ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, सिंपल है, स्टडी, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर लिए यार इस पे, है ना? अब जो हमारा नेक्स्ट आता है बेसिकली, अब मेरे को क्या करना है, सेकंड क्या है कि ये जो डेटा, अभी मैं इसको डेटा फ्रेम को ना यहाँ पुल अप करता हूँ, ठीक है? अब मेरा डेटा फ्रेम है ये, ठीक है? अब इस डेटा फ्रेम पे मैं क्या बोल रहा हूं, आई वॉन्ट द एग्रीगेशन टू बी परफॉर्म्ड अक्रॉस ऑल द शॉप। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 जो है, इन सब का एग्रीगेट हो जाए, इन सब के, सो इस सिंगल शॉप करके बन जाए, और उस शॉप में का एग्रीगेशन आया मेरे पास पर कैटेगरी फॉर द वॉट एवर सम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आई वांट टू कैलकुलेट पर शॉप, पर आई मीन फॉर अक्रॉस द शॉप्स पर कैटेगरी। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? I mean, anybody has any question in this? So इसमें basically the objective is to use the data across the shops, guys. I mean, अब इसको मेरे को डेटा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब अगर इसमें आप एग्रीगेट करोगे तो मेरे पास तो 4 कॉलम्स, 3 डिफरेंट शॉप्स बने हुए हैं, तो मेरे को एक सेपरेट शॉप बनाना पड़ेगा, शॉप 4, जो कि सेम तरीके से ऐड करेगा उसको, है ना? अगर सपोज आप शॉप 4 भी बनाते हो, यहाँ पे शॉप 4 करते हो, उसको इन सब का सम कर देते हो, तो आपने तो सम कर दिया ना। मेरे को मीन अगर चाहिए तो आपके मीन सेपरेट सबका अलग अलग कैलकुलेट करोगे, तो वो तो जरूरी, वो तो करेक्ट गलत हो जाएगा। सो बेसिकली आप इस पूरे डेटा फ्रेम को स्टैक करना चाहते हो। कैन यू सी दिस? यू वांट टू, योर ऑब्जेक्टिव इज टू बेसिकली स्टैक दिस डेटा where you want to add multiple rows for the same item of shop 1, shop 2 and shop 3. So this will be under a single column under a shop, right? So I want to add these different lines under a different stack. Anybody has any doubt on this? So in this data frame, basically I have an option of stacking also. एक stack का function होता है ना? Stack मैं आपको show करता हूँ stack run कैसे करता है। अगर आप simple देखो, अभी आपने stack जब करा तो दिख रहा है आपको, सो इंडिविजुअल जो रोज हैं वो मेरे पास एक सिंगल एंटिटी की तरह आ गए, एक सिंगल एंटिटी आ गया है मेरे पास, है ना? दिख रहा है आपको? यहाँ पे फर्स्ट आइटम है शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। सो बेसिकली फर्स्ट स्टैकिंग क्या हो गया, यू आर एडिंग 1 by 1 इंडिविजुअल रोज ऑन दिस। सो ये स्टैक एलिमेंट हो गया, ठीक है? अब इसमें आप इंडेक्स भी सेट कर सकते हो। सपोज ये तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आपका 0 ले रहा है, जो आपका सेट इंडेक्स, जो आपका ऑलरेडी इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक बार इंडेक्स चेक कर लेते हैं। ये डीएफ चेक कर रहा है, बाय डिफॉल्ट स्टैकिंग कर रहा है ऑन द बेस्ड ऑफ माय दिस इंडेक्स वैल्यू। आपको दिख रहा है, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स, राइट? 0, 1, 2 and 3. Based on this, it is stacking my data, correct? But I don't want to be stacking to be done based on this by default. I want stacking to be done based on my item and category, right? So because I want the data to be part of item and category. So across item and category, I want to stack for shops. This is what I want, right? So I can set an index also. आपको पता है, मैंने ऑलरेडी ये कोड आपको set index बताया हुआ है, right? So we have discussed about this set index function. So मेरे को एक index set करना पड़ेगा यहाँ पे. I want the index. I don't want the default index. I want the index to be the combination of my item and category, right? So this is what I want. So because across this only I want the data to be stacked. Guys, कोई confusion हो, please let me know. So here I have what I want, item, and I want what, category. Cool. So I have item and category here, and on this I want to stack. अभी इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है, right? ये दिखा, this is what I wanted, right?
सो नाउ आई हैव शॉप एंड शूज एंड क्लोथ्स, उसके अंदर मेरे पास शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 का डेटा आ गया. दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? एंड नाउ हियर टीवी टेक्नोलॉजी में मेरे पास शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 का डेटा आ गया. लाइकवाइज बुक्स, बुक एंड बुक्स में, फोन एंड टेक्नोलॉजी में. सो डिफरेंट जो मेरे पास 4 जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, सो बेसिकली यही 4 रोज है ना आपके पास. इसको मैंने एक इंडेक्स बना, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को एक इंडेक्स बना दिया मैंने बेसिकली, करेक्ट. और इसके अक्रॉस में मैं शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 कह रहा हूं, है ना. ये डेटा स्टैक हो गया. अब इसके अकॉर्डिंगली मेरा डेटा स्टैक हो गया. दिस व्हाट वी वांटेड, राइट? अब देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज यहाँ पे मिस्ड डेटा है. इसको हम यहाँ पे ये डेटा मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग है. सो विल फिल अप दिस, राइट? सो वी बेसिकली वांट दिस अगेन, शॉप शूज एंड क्लोथ्स टू बी फिल्ड अप in this missing data, right? We're going to fill that. And also यहाँ पे renaming का issue है, so we want to rename this column and this column also. So we're going to do that. So now देखो, अब मेरे पास stack आ गया. अब stack के ऊपर by default अगर आप reset index करोगे, so this index जो आपने set किया था वो तो column में convert हो जाएगा, है ना. अब बेसिकली इस stacking में जो आपने एक index बनाया था इस column को, I want to now reset the index. I want the original index to come now. Correct? This is what I want. So reset index on top of this, देखते हैं क्या आता है. And I cannot drop this equal to true because I need these indexing, because these are my indexes, right? I want this index to be there, so I cannot drop these original indexing. So if we do this, now can you see this is the data we wanted. So now I have item and category. Okay, forget about this column names, I'm going to rename it later, but this is what we wanted, right? So shoes and clothes now have shop 1, shop 2 and shop 3, right? This is what we wanted. I have the data. Now on this, if I run this aggregate function, it will give me the data. It will give the aggregation on top of my category or whatever I want, right? This is what it will give me across the shops, right? किसी को कोई डाउट है गाइस? किसी को भी कोई डाउट है? अब इसमें बेसिकली मुझे क्या रन करना पड़ेगा? रीनेम रन करना पड़ेगा. रीनेम क्या करना है मुझे? रीनेम भी आपको पता है, इट बी सिंपल. वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस फंक्शन ऑल्सो. रीनेम में भी अगेन आपका वो डिक्शनरी फॉर्मेट में लेता है. ओरिजिनल फर्स्ट एंड देन द रिप्लेस नेम लेटर. सो यू हैव ओरिजिनल एज लेवल अंडरस्कोर 2 आ रहा है, राइट? लेवल अंडरस्कोर 2 एंड देन यू आर गिविंग दिस नेम एज व्हाट, से शॉप्स, है ना. एंड सेकंड 0 भी आपको चेंज करना है. तो 0 तो इंडेक्स है, तो 0 एक तो इंटीजर में लेना पड़ेगा. सो 0 को आपको रिप्लेस करना है कॉस्ट से. सो बेसिकली कॉस्ट से ये मेरा, और प्राइस कुछ भी कॉस्ट में लिख लो चलेगा, कॉस्ट, ठीक है. ये हो गया मेरा. अब इसको रन करके देखते हैं एक बार. आ गया. नाउ आई हैव दिस डेटा फ्रेम जिसको मुझे यूज करना है ग्रुप बाय के ऊपर, बिकॉज ऑन दिस आई वॉन्ट द कैटेगरी वाइज मेरा एग्रीगेशन. सो अभी कैटेगरी मेरे पास क्लोथ्स. अगर अब मैं कैटेगरी का ग्रुप बाय लेता हूं, सो आई हैव अंडर द क्लोथ्स आई हैव 3 रोज नाउ, राइट? बिकॉज शॉप्स 3 है मेरे पास. सो अभी इन तीनों का वो सम एंड मीन निकाल के देगा मुझे बाय डिफॉल्ट, करेक्ट. अब क्योंकि ये एक डेटा फ्रेम न्यू है, तो इसको भी अगेन डेटा फ्रेम न्यू पे सेव कर लेते हैं फॉर नाउ, है ना. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डेटा. सो दिस इज माय न्यू डेटा. So now on top of this, I want the aggregation to be performed. So aggregation of dict वापस से create करते हैं. So एक बार df new को भी print कर लेते हैं, तो थोड़ा सा easy होगा हमें लिखने के लिए कोड. Cool. Okay, so on this I want aggregation dict के ऊपर क्या करना है यार मेरे को? Item है ना, item का भी तो करना पड़ेगा. आइटम का क्या करना था मेरे को? साइज निकालना है ना, हाँ, काउंट निकालना था शायद. ठीक है, साइज कर लेते हैं. सिंपल साइज भी आ जाता है, साइज आ जाएगा मेरे पास. एंड देन आई हैव अनदर कॉलम जिसपे मेरे पास कॉस्ट्स, राइट? सो सी कैपिटल लिख दिया मैंने. ओके, सी और कॉस्ट्स. एंड देन कॉस्ट्स का आई वांट व्हाट, आई थिंक उसका सम मीन निकला था ना, हाँ, सम. एंड देन आई वांट मीन एंड आई वांट स्टैंडर्ड डिविएशन. ये मेरा एग्रीगेशन डिक्ट है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. एंड देन आई वांट व्हाट, सो df अंडरस्कोर न्यू के ऊपर मैं ग्रुप बाय करूँगा. ग्रुप बाय क्या करूँगा? ग्रुप बाय ऑन कैटेगरी करूँगा ना, कैटेगरी करूँगा, कैटेगरी. एंड देन एग्रीगेट में पास करूँगा मैं एग्रीगेट अंडरस्कोर डिक्ट. कूल.
चेक कर लेते हैं क्या आता है मेरे पास. ये this is what I got now. Okay, so now can you see this? I don't have the cost on individual shops. I have it across all the shops. Correct? अब सेम चीज को मैं रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ. रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स है ना, छूट गया यहाँ पे. एंड देन इनफैक्ट इसको मैं एक नेम में सेव कर देता हूँ, नाम भी चेंज कर देता हूँ ना फटाफट से. df new अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ उसको. ठीक है, ये हो गया. एंड देन df new अंडरस्कोर 1 में मेरे पास कैटेगरी, सो अंडरस्कोर df अंडरस्कोर new डॉट 1 का मैं कॉलम स्पीड चेंज कर देता हूँ. new अंडरस्कोर 1 डॉट कॉलम्स is equal to get underscore dot join call for call in df underscore new dot columns है. नहीं यार, df underscore new होगा ना यहाँ पे, तो df underscore new underscore 1 होगा. dot columns dot values df underscore new underscore 1 देखते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब सो सेम क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया. फर्स्ट वी सॉल्व इट अक्रॉस फॉर इंडिविजुअल शॉप्स, है ना. सो ये मेरे पास डिफरेंट शॉप्स के इंफॉर्मेशन थे. सो मेरा जो फर्स्ट आउटपुट आया वो बेसिकली शॉप 1 का सम और मीन सेपरेटली आ रहा है मेरे पास, राइट. शॉप वाइज आ रहा है. अब इसमें सेकंड में क्या कर, मैंने अक्रॉस द शॉप्स कर दिया. सो सारे शॉप को इंक्लूड कर दिया डेटा में, एंड देन आई एम सॉल्विंग दिस. कोई डाउट गाइस किसी को? इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट अगेन आई थिंक इफ यू आर एबल टू ग्रास्प दिस स्टैकिंग एंड रीसेटिंग इंडेक्स का फंडा, तो ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए इसमें. ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? आई नो पीपल आर एंजॉइंग देयर हॉलीडे टुडे, सो दे आर नॉट इन अ मूड टू टॉक. आई एम ओके विद दैट. Fair enough. So I think we're pretty much done for the day. I'm still going to wait for I think a couple of more minutes if anybody else has any question, so we can take that, or else we can wrap up. But I believe we did some good questions today, and especially the shop one, I believe. But again, the practice of other questions is also important, because if you do not understand the concept of aggregate, transform, and all that, right? So then it's not very easy for you to tackle that. But again, I think we have solved n number of questions now, so it should not be more tricky for you anymore. But again, this shop question across the categories, across the different shops, and then combining, stacking the data based on the shops also. So I believe this would have helped you to understand some of the concepts as well. कोई issue है किसी को? Please do let me know. Cool. I think with that note, thank you so much. I really I'm happy that we discussed some good question today, and I know that people will watch this video later. So guys, even after watching, if you have any questions, while you watch this video, that you have any question on any specific concept, do feel free to ping me on our another live session. So maybe we can take that at that time as well. So I don't have any issue in that. Cool. But again, thank you so much, guys, and I wish you a happy Vijayadashmi. I hope you guys are enjoying your day with your family and friends. But again, as always, I would request you to be part of our lectures as well. So tomorrow we're gonna be starting with SQL. So tomorrow, this weekend, so we are having the master class of SQL. So we're going to start from the very base. So I'll be talking about few of the conceptual parts first. So tomorrow 10 a.m. So we have 2 lectures tomorrow and then 2 day after on Sunday. So I'll try to finish up the theoretical part ASAP, because there's no much of theory there, but again, at least you should be knowing few odd things in SQL before jumping into the exercises. So once you're done with the pure conceptual part, right? So I'll try to jump to the hands-on. I'll also try to, prepare
installation guide for MySQL Workbench. So we'll be using MySQL Workbench for that. But again, let's see. So we're gonna meet tomorrow, guys, at 10 a.m. and let's discuss on Python. Sorry, let's discuss on SQL. So we're gonna be starting from day one. Cool. And we're gonna be starting again with Python on Monday. So this weekend gonna be for SQL, but again, we're gonna be starting the similar things on Monday for Python. Cool. Thank you so much, guys, and I wish you again a happy evening and stay safe, and let's meet tomorrow at 10 a.m. Thank you. Bye-bye.